Very good evening to all of you. Is this audible, visible to everyone? देखि पारुछन समस्ते? All clear? देखि पारुछन समस्ते? ठीक अछि. Okay. So formally, I welcome all of you to the Physics Wallah platform, and especially to this session, which has been exclusively designed for OPSC OCS Prelims Examination. जो माने ए वर्ष OCS Prelims Exam दवा को जाउछन्ती सेमानक पई ये सेशन स्टार्ट हेची समस्त जानि सारिथिबे. यार लॉन्चिंग ये कोर्स लॉन्चिंग आमे करिथिलु पूर्वरु एंड अदर सब्जेक्ट किछि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़े किछि इंपोर्टेंट सब्जेक्ट आमे ऑलरेडी पढ़ी सारिचे. इन दिस सेशन आई विल बी टेकिंग योर इकोनॉमिक्स क्लास. इकोनॉमिक्स क्लास रे आमे जहां भी पढ़िबा ये सेशन मान करे ये वीक कंप्लीटली आमे पढ़िबा इकोनॉमिक्स. कोन कहली ए वीक रे आमे कंप्लीटली इकोनॉमिक्स पढ़िबा एवरी डे एट 9 pm. समस्ते मते जॉइन करि पारिबे संध्या 9 टारे 9 टारु 10 टा पर्यंत मंडे टू सैटरडे क्लास रहिबो. ठीक अछि, समस्ते ये क्लास को जॉइन करि पारिबे. बेसिक्स रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो हम सिलेबस रे जहा अछि आज पर द सिलेबस मु स्टार्ट करबी एंड आई विल गो वन बाय वन टॉपिक विल कवर वन बाय वन टॉपिक जेते इंपोर्टेंट टॉपिक अछि सब गुडा को हम कवर अप करबा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव रे. ठीक अछि, सो आज रो टॉपिक ऑफ डिस्कशन अछि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स रो किछि बेसिक पॉइंट्स मानक ऊपर मु डिस्कशन करबी. So let me inform all of you, after the class you can download this complete PDF. ये होची complete PDF याकू समस्ते डाउनलोड करि परिबे ये नोट्स को आफ्टर द क्लास कोदो नाम टेलीग्राम चैनल आपको डाउनलोड करि परिबे. ठीक अछि, ऑलराइट. सो आज हम देखिबा इकोनॉमिक्स रो डेफिनेशन कोन, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, देन व्हाट इज इकोनॉमी, हैना बेसिक कॉन्सेप्ट्स आउ किछि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऊपर हमें डिस्कशन करिवा related to the basic concepts of demand, basic concepts of supply, factors of production. एमती किछि important point को नै म आज डिस्कशन करिवि समस्तक सहित. So before starting, let's talk about some of the important resource. Economics पई कोन बही पढिबा दरकार, को बही पढिबे, को रिसोर्स फॉलो करिबा दरकार, को रिसोर्स फॉलो करिबा दरकार कहि दउछि एटी समस्तक. एनसीईआरटी बुक फॉलो करि परिबे क्लास 9 रो क्लास 12 पर्यंत. नीति आयोग रो रिपोर्ट फॉलो करि परिबे, अनदर इंपोर्टेंट सोर्स फॉर दिस एग्जामिनेशन. रमेश सिंह बुक योर चॉइस, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, बजट, इकोनॉमिक सर्वे. नाउ दिस इज द ब्रीफ लिस्ट. कोन कहि दिस इज द ब्रीफ लिस्ट जोडा को आपण माने पढिबा दरकार. ठीक अछि, सो एथुर कोन कहल सब इंपोर्टेंट होछि द हिंदू पढिबा, नीति आयोग रो रिपोर्ट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, दिस इज मैंडेटरी, समस्त याको पढिबार आवश्यकता अछि. नाउ रमेश सिंह आई विल कीप इट इन ऑप्शनल, योर चॉइस. जदि टाइम अछि पढि परिबे, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस आल्सो. those who are attending the classes regularly, those who are making notes out of the class, semanko pai konosi books konosi resource पढिबार आवश्यकता नाही. They can only rely on the class and class notes. समस्ते class और class notes ऊपर completely rely करि परिबे, या व्यतीत अलगा कोनोसी जिंस पढिबार आवश्यकता नाही. Now is this clear? कोन हमें पढिबा कोन पढिबानी. Now let's talk about what is the significance of economics in prelims examination. Prelims exam रे economics रो significance कोन. Number of questions last time asked, it is somewhat around 5 to 7 questions. Last to last year somewhat around 12 to 13 questions. So on an average you can expect 10 plus number of questions, 12 to 13 questions you can expect from economics. Now why is economics a difficult subject for the students? Aspirant manako pai why it is always a difficult subject? Economics is not difficult, rather
we lack in understanding the basic concepts of economics. Economics is easy, economics is understandable, it is doable, समस्त exam रे आपको करि परिबे, but the thing is that you have to understand the concepts very clearly. Now these concepts are quite technical, quite scientific in nature. You have to understand the nature, the type of question they asked in, generally they ask in the OCS exam, the pattern, the trend you have to analyze, and in accordingly you have to answer those questions. Please remember, prelims examination is very easy as compared to mains examination, because in prelims all the 4 options are in front of your eyes. You have to choose between 1, 2, 3, 4. ABCD जदि आखि बंद करी choose करें, then there is a probability of 25% that your answer is going to be a correct one. बुझी होची कि नहीं? यदि choose करूछंती probability अछि 1/4 probability answer ठीक होबार, but mains is difficult. ये series हमें start करिवा prelims पई, जोथरे मो most of the important topics for economics को एटी cover up करी. ठीक अछि. सतीश is asking कि सर ASO OCS रो prelim syllabus approximately same. ASO रे OS to कम level लो, OCS to कम level लो question. So difficulty level is easy to medium maximum. But in OCS exam it is medium to difficult. ASO रे level of questions easy. If you are preparing for OCS, don't worry, ASO रे after सब question समझते करि पारि. ठीक अछि. So ये गला basic concepts ऊपर कहिली. How to prepare for economics, ये हला book list. Excuse me. ये हला book list कथा कहली, एई book list को समस्ते properly follow करिवा दरकार. ठीक अछि. बा जो माने क्लास करूछन्ते समान को कोनोसी बुक लिस्ट रो आवश्यकता नाही, समान केवल करंट अफेयर पढिबे, आउ किछि भी पढिवार आवश्यकता नाही. कोन कहली, आउ किछि भी पढिवार समान को आवश्यकता नाही. हला now topic कोन अछि हम पाखरे, let's have a micro syllabus analysis. Introduction, basic concepts to macroeconomics. I will discuss what are the subtopics. तो गोटे एग्जाम पई जेतले प्रिपेयर होंती सबटू इंपोर्टेंट कथा होची एटी कि you have to understand the nature, type, pattern of question, trend of examination as well as the syllabus. Unless you cover or you know the syllabus, you cannot prepare. Syllabus को properly जानतो. Syllabus को जानिबार अर्थ is, does it mean you will download these PDF files from Google Chrome and you will save it in your phone? No. So this is not syllabus analysis. Syllabus analysis means you have to list out the topics, then the subtopics. For example, the topic is national income and these are the subtopics which are important for me, like production method, value added method, income method, expenditure method, some macroeconomic indices, elasticity. Now this is the exhaustive list of the subtopics that you have to focus on. So khali simply, if you know the syllabus, then this is not sufficient. You have to know the micro syllabus. So you have to understand what to study and what not to study. The moment you understand the difference between what to study and what not to study, most of your strategy is over. Most of your strategy for preparation is over. Once you know what to study and what not to study, what to follow, what not to follow, what is the best resource for you. बुझी पाले कि नहीं समझते? Is this clear? So for to make your preparation easy, I have given the exhaustive list of the subtopics under a particular theme. Now let's say fiscal policy under a capital account, current account, revenue, fiscal deficit कोन, deficit financing कोन, FRBM act कोन, ये सब exhaustive list मु देइछि, आपण माने आकु सब पढि परिबे. You can download all these things, so it is not required to discuss. ये सब को bit by bit discuss करिवार आवश्यकता नहीं. So all the topics are given here. Total number of topics 32 number of topics. So एथिरु आपण आकु डिवाइड कर देबे निज अनुसार. कोन कहली, सब टॉपिक गुडा को निज अनुसार लिखि देबे. बुझियला? समित, सतीश, श्रिया, ज्योति, नमस्कार समस्तंकु, प्रणाम. Very good evening to all of you. ना मते कोनते सेशन स्टार्ट करिया पूर्वरु इकोनॉमिक्स केते जन को डिफिकल्ट लागुची. स्टार्ट करिया पूर्वरु मते कोनते इकोनॉमिक्स केते जन को डिफिकल्ट लागुची.
I will make economics easy for you, but the one thing you have to promise, you have to attend all the classes religiously, you have to make notes out of it very judiciously, you have to keep patience, and you have to work hard as well as smart work and hard work, both are required. So this is a promise which is required from your side. So from my side, I will deliver, I will complete all the syllabus in a stipulated time. Not difficult, Somit, बहुत खुशी लगिला सुनिकी, बढ़िया लगिला कि नहीं ये difficult लागुनी, सतीश difficult लागुची, ठीक अछि। श्रिया किछि जाना नहीं, no problem, don't worry. जो माने को जाना नहीं, it is my work to let you know, to make this subject understandable for all of you. तो प्रथम कथा हला मनरु भय काढी देबे कि इकोनॉमिक्स इज डिफिकल्ट। कोन कहली फर्स्ट थिंग, मनरु भय काढी देबे इकोनॉमिक्स इज डिफिकल्ट, समस्त कोन इकोनॉमिक्स इज इजी। कोन कहबे समस्त कहबे इकोनॉमिक्स इज इजी। Definitely I will make economics easy for you, the whole syllabus, not a single chapter, not a single concept, the whole syllabus of economics I will make it easy for you. Then what is the only requirement from your side? You have to attend all these classes religiously. You have to make notes out of it, you have to download all these PDFs, notes from the Telegram channel, and every day you have to devote at least 2 hours to economics. Now economics रो relevance केवल prelims नुहे, prelims सहित mains रे भी अछि। आउ गोटे important point पूछ, you have to learn some basic concepts of economics. It is not required, neither expected from you to be an economist. आपन को economist होबार नहीं, ताले कौन करिवार अछि, you have to learn some basic concepts of economics which are required for socio-economic development or which are required to establish a welfare state. Welfare state establish करिया पई जहा दरकार जति कि इकोनॉमिक्स दरकार, सेति कि इकोनॉमिक्स आपन को पढिबा दरकार, ताटो अधिक पढिबार किछ आवश्यकता नै। इकोनॉमिक्स हबार नाही हमको, ताले वेलफेयर स्टेट कोन? वेलफेयर स्टेट रो अर्थ होउची जोटी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, जोटी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, रास्ता घाट पानी बिजुली ये सब प्रोवाइड करा जाउची। नाउ स्टेट रो नेचर मोटी चेंज करची, पुलिस स्टेट रो अर्थ हला जेतबेले ये स्टेट एठी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची, जेतबेले ये स्टेट एठी हमको डिफेंस दउची, दैट इज पुलिस स्टेट। वर्तमान इंडो पाकिस्तान वार हला, नाउ वार रे इट इज रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अस, हमको प्रोटेक्शन दबो, responsibility of the state. Now state has to ensure our protection, that is protection, that is a police state. Now what is welfare state? Indo Pakistan war sabu bele honi, the rest of the time period रे state को हमको डेवलपमेंट करिवार अछि, जाहा को राम राज्य कहआ जाउछि। कोन कहली? जाहा को राम राज्य बोली कहआ जाउछि, हंगी नहीं, जाहा को वेलफेयर स्टेट कहआ जाउछि, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहआ जाउछि। सो एटी हमको स्टेट को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिवार अछि। वंस यू बिकम an OS officer and IAS officer, your basic responsibility will be to establish welfare state. Unless you know the basic concepts of economics, applied part of economics, you cannot establish this welfare state. हैला, तो एटा मुंडे रे पूरी दियंतु कि हमको वेलफेयर स्टेट में इकोनॉमिक्स पढिबार अछि। एवं इकोनॉमिक्स हमको इट इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग ऑन डे टू डे बेसिस, इट इन्फ्लुएंसेस द डिसीजन, इंपैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, इन्फ्लेशन रेट, प्राइस, ये सब को कंट्रोल करछि इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, इट इंक्लूड्स allied agriculture, industry, tertiary sector, capital market, money market, banking, sub market, external trade, sustainable development, economics and environment, demographic dividend, education, healthcare facility, tourism sector, insurance sector, 5-year planning, niti aayog, all these are the exhaustive syllabus that you have to cover for civil service examination. बुझी पारले कि नहीं समझते मो कथा? बुझी पारले कि नहीं? चलो ताहले इकोनॉमिक्स स्टार्ट करबा। प्रथम इकोनॉमिक्स तो हमें स्टार्ट करबा, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स कहले हमें कोन बुझुचे। इकोनॉमिक्स बुझिया पहिले गोटे छोटिया कांसेप्ट बुझेबी, समस्त बुझिए मन देकी। कोन कहली? गोटे छोटिया कांसेप्ट बुझेबी, समस्त मन देकी बुझेबे। कोन ना? प्रथम वाला रिसोर्स, द्वितीय वाला ह्यूमन वांट। नाउ ह्यूमन वांट कोन ना? हमर इच्छा, जहा हम इच्छा को कहआ जाउची ह्यूमन वांट। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट? Human want is unlimited in nature. For example,
मु आज जने चलिकी जाऊँगी नेक्स्ट कौन इच्छा ना गोटे साइकिल चलैला पर इच्छा गोटे स्कूटर चलाती गोटे बाइक चलाती बुलेट चलाती गोटे कार चलाती कार गोटे एक्सयूवी एसयूवी चलाती देन गोटे मर्सिडीज ऑडी चलाती so from this example it is clear that our wants human want is increasing day by day gradually it increases yes or no yes it increases so human want kon what is human want is limited or unlimited samaste koibe tige human want is limited or unlimited jyoti yes unlimited human want is unlimited now what is a resource which satisfies the human want is called a resource जे ह्यूमन वांट को सैटिस्फाई करे ताको रिसोर्स कहा जाए ताले तुमर पढ़िवार इच्छा अछि आई कैन टीच यू सो आई एम अ रिसोर्स फॉर यू तुमर खाइबा को इच्छा अछि फूड कैन मिटिगेट योर हंगर सो फूड इज अ रिसोर्स फॉर यू हां कि नहीं ताले रिसोर्स हम पाखरे लिमिटेड ना अनलिमिटेड रिसोर्स हम पाखरे लिमिटेड ये नेचुरल रिसोर्स हे पारे मैन मेड रिसोर्स हे पारे ये रिसोर्स हमें देखुचे वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्स कोन कहलु वी हैव लिमिटेड रिसोर्स so हमको satisfy करिवार अछि unlimited human want को by using limited resource कौन कहली we have to satisfy unlimited human want by using limited resource that is nothing but known as economics economics दीटा शब्द रु आसी ग्रीक शब्द रु गोटेला oikos गोटेला nomos oikos ର अर्थ family nomos ର अर्थ custom or management so economics is all about family management or household management ताले हमें देखिबा व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन फॉर इकोनॉमिक्स रो डेफिनेशन कोन मुके इट इज अ ब्रांच ऑफ ह्यूमैनिटीज व्हाट इज ह्यूमैनिटीज देन ह्यूमैनिटीज इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी दिस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी on day to day basis we do different type of activity we do political activity social economic administrative activity so the study of political activity is political science the study of social activity is sociology the study of administrative activity is public administration study of economic activity is economics study of social activity is sociology so study of political activity is political science मुझे लगी नहीं study of political activity is political science ताले हमें 2 पॉइंट सिखिले study of economic activity is economics then what is economic activity कोन economic activity is the activity which involves profit loss wage payment and employment कोन कहली profit loss wage payment एवं employment को जे include करूची ता कोआ जाय that is known as economics बुझेला economics कोन now I think everyone is clear what is economics now एठी आउ दीटा टर्म मु देखबी economics and economic many times these two terms are misused कोन कहली many times these two terms are misused economics and economic कोन होउची एठी सिंपल कथा गोटे कहबी गोटे एग्जांपल दोउची देखिबे तळे गोटे बाइक किनुचंती से बाइक तार एडवर्टाइजमेंट रे देखिबो कि 80 किलोमीटर पर लीटर what is the mileage is 80 किलोमीटर पर लीटर बट प्रैक्टिकली हमें तो गाड़ी चलेबा देखिबा सेटा 80 नुए से कमे कि 65 हे जाउछ तले काहे कि तो 80 किलोमीटर पर लीटर देखा जाइतला जेतोळे 80 किलोमीटर पर लीटर देखा जाइतला सेतोळे हमें कोन देखिले कोन कहले 80 किलोमीटर पर लीटर देखला बेले हमें कोन देखिले ना देयर वाज नो ट्रैफिक इन द रोड रे किछि ट्रैफिक नाही ब्रेक क्लच ये सब ठीक काम करूछ अननेसेसरी तेल यूज होनी फ्यूल यूज होनी तो ए ग्राउंड नाउ दीज आर आइडियल ग्राउंड्स ए ग्राउंड प्रैक्टिकली मिलेनी कोन कहली एटा प्रैक्टिकली मिलेनी प्रैक्टिकली चलेला बेले गाड़ी हमको डेफिनेटली देयर विल बी ट्रैफिक गाड़ी रो गियर क्लच ये सब हमको यूज करिया पड़िबो बारंबार सो अधिक तेल खर्च हो ना आइडियल ग्राउंड मिली पारेनी सो हम देखले गोटे थ्योरी गोटे प्रैक्टिकल आइडियल कंडीशन रे एक्सक्यूज तो आम देखिले कौन आइडियल कंडीशन रे गाड़ी रो माइलेज जति कि देखुतला से वन सेटा कहले सो एक्जेक्टली गोटेला थ्योरी गोटेला प्रैक्टिकल 80 किलोमीटर पर लीटर दैट इज थ्योरी 65 किलोमीटर पर लीटर that is the practical application exactly same thing happens here economics is nothing but a theory economics is a theory
So economics is the study of economy. It is a branch of humanities like physics, chemistry, sociology. जेमती हम पढ़ुचे, it is a discipline. हमें जो इकोनॉमिक्स रे पढ़ुथिबा कांसेप्ट को थ्योरी को अप्लाई करछो गोटे रीजन ऊपर ता कहूचे इकोनॉमी. फॉर एग्जांपल हमें कहबा इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, economy of Pakistan, economy of United States of America, economy of Chinese economy. So that is called of, it is related to a place or origin. It is economy of India, economy of USA. So economy is the practical application. What is this? Now this is the practical application. बुझी पारिले? What is theory and what is theory and what is practical application? कौन कि नहीं मते कौन सा? Now are you clear with the difference between economics and economy? Everyone clear? Economics how economy with कौन difference? Very simple difference. Very simple difference. Everyone clear? Yes. श्रिया बुझे गला बहुत बढ़िया. ज्योति, समित, सतीश, स्टेप बाय स्टेप जीवा धीरे धीरे जीवा समस्त बुझे. वेरी गुड. चलो तापर हमें देखियो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स रो सब्जेक्ट मैटर को साधारणतः दुई भाग रे डिवाइड करा जाए. गोटेला मैक्रो आ गोटेला माइक्रो. नार जणा पड़ुची माइक्रो मैक्रो. माइक्रो इज नैरो. एठी हमें कोन देखुचे ना, एठी हमें देखुचे डिसीजंस मेड बाय हाउस होल्ड. मैक्रो रे हमें कोन देखु ब्रॉडर कांसेप्ट, स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमी ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, जीएनपी, द होल इकोनॉमी वी आर टॉकिंग अबाउट. माइक्रो रे कोन देखुचे, इट देखुचे हाउ अ कंपनी कुड लोअर इट्स प्राइस टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्ट डिमांड. द कंपनी केमदा प्राइस को रिड्यूस करि परबो ता प्रोडक्ट डिमांड को बढ़ेया पय. एटा हम देखिले कोठी माइक्रो रे देखिले एवं एटा कोठी देखिले आपको हम मैक्रो रे देखिले. बुझेला? आपको माइक्रो रे देखिले एवं आपको मैक्रो रे देखिले. चल दी तीनटा क्वेश्चन करे. योर इनकम इज माइक्रो और मैक्रो. चल दीटा कथा आउथर कहू शॉर्टकट रे. मैक्रो इज द होल इकोनॉमी, ब्रॉड कांसेप्ट. माइक्रो नैरो कांसेप्ट. माइक्रो इज नैरो कांसेप्ट. योर इनकम मे बी हाउसहोल्ड्स इनकम है. सीटा में माइक्रो यूज करछ. टर्म माइक्रो इज यूज्ड. डिसीजंस मेड बाय हाउसहोल्ड और बिजनेस. Now what is this? This is a broader concept. Macro, it is about the whole economy, the entire economy. It is about the entire economy. बुझेला? ताले मते कहले एटी कोन हो? कोन हो कोन मते एटा टिके फास्ट. योर इनकम कोन हो? बहुत बढ़िया. इंडिया रा जीडीपी इन 2020. दिस इज माइक्रो. नाउ व्हाट इज दिस माइक्रो और मैक्रो? इंडिया रा जीडीपी. इंडिया रा जीडीपी कोन हो? इंडिया रा जीडीपी. The level of unemployment in IT sector. इंडिया रा जीडीपी. इंडिया रा जीडीपी मैक्रो. वेरी गुड. समस्त कहछन बहुत बढ़िया. दिस इज मैक्रो. Now level of unemployment in IT sector. Now IT sector is a sub sector, tertiary sector. So not the whole economy. एटी माइक्रो ऊपर हमें डिस्कशन करछे. माइक्रो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. इंडिया रे लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखुछे माइक्रो और मैक्रो. क्विक रेस्पॉन्स प्लीज. होल इकोनॉमी ऊपर डिस्कशन करछे हमें. टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी. So this is macro.
ठीक अच्छे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बाय टाटा इन 2020 मैक्रो और माइक्रो quantity of production by Tata company only about one company, so this is micro not the whole. very good समस्त बहुत बढ़िया आंसर देछन पूछे गला नेक्स्ट पॉइंट को आसीबी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी बहुत स्लो जाउचे बुझी परछन समस्त क्लैरिटी आसुची जे एतिक इकोनॉमिक्स बुझी परछ मु जहा बुझौची पूरा इकोनॉमिक्स बुझी पारियो प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी तीनटा पॉइंट ऊपर फोकस करिवे व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस व्हाट टू प्रोड्यूस रो अर्थ कोन कहा पाई प्रोडक्शन करिवा सॉरी व्हाट टू प्रोड्यूस माने कोन प्रोडक्शन करिवा व्हाट टू प्रोड्यूस माने कोन नौज कोन प्रोडक्शन करिवा हमें देखियो फूड प्रोडक्शन और क्लॉथ प्रोडक्शन लेट्स से फूड प्रोडक्शन कले जदि फूड प्रोडक्शन करिवा ताहले हम कहबा एटी फूड प्रोडक्शन हबो ना राइस प्रोडक्शन हबो हैला एटाला हम देखुचे कोन प्रोडक्शन करिवा व्हाट कमोडिटी वी हैव टू प्रोड्यूस व्हाट कमोडिटी वी हैव टू प्रोड्यूस सो एटी विभिन्न प्रकार गुड्स तले कंज्यूमर गुड्स माने जहां में कंज्यूम करछे डे टू डे बेसिस रे लाइक राइस सुगर क्लॉथ शूज ताको करिवा ना प्रोड्यूसर गुड्स लाइक टूल्स मशीन्स इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूसर गुड्स माने जहां को यूज कर दिया एसेट्स एंको यूज करके आउ किछि प्रोडक्शन हुए मोर प्रोडक्शन टूल्स मशीन्स इंस्ट्रूमेंट्स आको यूज कले कोन हबो ना अधिक प्रोडक्शन हो कंज्यूमर गुड्स में कौन थी राइस सुगर क्लॉथ शूज एगुड़ा कंज्यूमर गुड्स जोटा डेली दरकार श्रिया माइक्रो टाटा कंपनी यस टाटा माइक्रो श्रिया कहीं ना वी आर टॉकिंग अबाउट वन कंपनी ओनली नॉट द एंटायर होल इकोनॉमी ओनली टाटा प्रोडक्शन अदर कंपनी प्रोडक्शन इज नॉट इंक्लूडेड हां कि नहीं क्लियर ताले बुझले कंज्यूमर गुड्स कोन जोटा हमें कंज्यूम करछे प्रोड्यूसर गुड्स सो वी हैव टू चूज सोसाइटी हैज टू चूज बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड द प्रोड्यूसर गुड्स क्लियर ओके नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा टी necessity goods and luxury goods which are required for your day to day living that is necessity goods example rice sugar cloth shoes ये सब luxury goods these are not required but they add luxury to our life like tv ac fridge washing machine या बिना हमें बंची पारिबा बट एमाने जदि रुहंती देन इट इज बेटर लग्जरी गुड्स वी हैव टू चूज हमें को स्टेज रे अछि मते को 1980s रे 70s रे हमको कोन दरकार थिला नेसेसिटी गुड्स ना लग्जरी गुड्स कहार आवश्यकता थिला भारत वर्ष भारत स्वाधीन हला परे 1960s 70s ए समय हमको कोन आवश्यकता थिला कहार यार थिला नेसेसिटी गुड्स ना लग्जरी गुड्स सो जेहेतु रिसोर्स आम पाखे लिमिटेड कौन करिया पड़ो आमको जेहेतु वी हैव लिमिटेड रिसोर्स ताले हमको कौन करिया पड़ो ना वी हैव टू गो फॉर मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी माने यूटिलिटी माने गोटे रिसोर्स को यूज कला पर हमको सैटिस्फैक्शन मिले दैट इज यूटिलिटी आमे देखिया मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन कोथरे मिलुछि कौन देखिबा मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन कोथरे मिलुछि बुझियला वॉइस वॉइस इज फाइन वॉइस मो पाखे दीटा स्टूडेंट भी अछि बहुत बढ़िया वॉइस अछि जो मन को स्लो लगुची रेज योर डिवाइस वॉइस वॉल्यूम रेज करंतु मोबाइल लैपटॉप जो उतरे देखछन अदर्स क्लियर am I audible very properly clearly there is maximum happiness to maximum people यार अर्थ maximum लोकंग पाखरे maximum satisfaction पहुंची परिवा दरकार तले ए मेथड को हम एठी अडॉप्ट करिवा then second problem of the economy is how to produce means what is the method to produce एटा कोन what is the method to produce हमें कोन देखिबा the first is capital intensive method तमने हम पाखे जदि कैपिटल अधिक अछि कोन कहली कोन देखिबा हम एठी ना कैपिटल इंटेंसिव रो अर्थ कोन जदि हम पाखे अधिक कैपिटल अछि
कौन कर जदि हम पाखरे अधिक कैपिटल अछि ताले हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड को यूज करबा जदि हम पाखरे टेक्नोलॉजी अछि ताले हम टेक्नोलॉजी इंटेंसिव मेथड को यूज करबा हला यूज तमे देखियो व्हाट इज द रिसोर्स दैट वी हैव व्हाट इज द रिसोर्स दैट वी हैव कैपिटल ना लेबर यदि लेबर अधिक अछि ताले लेबर यूज करियो अधिक यदि कैपिटल अधिक अछि ताले हमें कैपिटल यूज करिवा ताले हमर ऑब्जेक्टिव कोन ना कम रिसोर्स यूज करी अधिक प्रोडक्शन करिवा कोन कहली कम रिसोर्स यूज करी अधिक प्रोडक्शन करिवा होची हमर बेसिक ऑब्जेक्टिव हैला नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस थर्ड क्वेश्चन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस कहा पाई प्रोड्यूस करिवा for whom to produce means who is the consumer the rich or the poor एटी दीटा पॉइंट कहबी गोटेला सिटीजन आ गोटेला कस्टमर गोटेला सिटीजन एंड अनदर वन इज कस्टमर सिटीजन किए कस्टमर किए ना द सिटीजन हैविंग परचेजिंग पावर इज कॉल्ड कस्टमर सिटीजन हैविंग परचेजिंग पावर इज कॉल्ड कस्टमर जो सिटीजन ना परचेजिंग पावर अछि ताको कस्टमर को आजु यार परचेजिंग पावर नहीं से कस्टमर नहीं हैला जे किणी पारिबो से हला कस्टमर ताले सिटीजन ना कथा किए बुझिबो ना गवर्नमेंट कस्टमर कथा किए बुझिबो ना प्राइवेट सेक्टर कस्टमर कथा किए बुझिबो प्राइवेट सेक्टर सिटीजन ना कथा किए बुझिबो कहली ना गवर्नमेंट बुझी पारले मो कथा कि नहीं हैला सो परचेजिंग पावर डिपेंड्स ऑन द इनकम इनकम थिले तो परचेजिंग पावर बढ़िबो मते को हेल्थ केयर फैसिलिटी पाई सिटीजन कोठी जीवो एससीबी मेडिकल जीवो ना गोटे प्राइवेट हॉस्पिटल जीवो सिटीजन कोठी जीवो एससीबी मेडिकल ना गोटे प्राइवेट हॉस्पिटल जीवो हेल्थ केयर पाई एजुकेशन पाई सिटीजन कोठी जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज ना प्राइवेट स्कूल कॉलेज कोठी जीवो गवर्नमेंट एवरीवन एग्रीड तो सिटीजन गवर्नमेंट सिटीजन ना नीड को गवर्नमेंट कैटर करिवो प्राइवेट सेक्टर नीड को कस्टमर कैटर करिवो के प्राइवेट सेक्टर नीड को कस्टमर कैटर करिवो बुझेला कि नहीं हैला ताले परचेजिंग फॉर whom टू प्रोड्यूस कहा पाई प्रोडक्शन होची whether for the citizen or for the customer now 2 rupees rice 5 rupees meal आहार रे मिलुची 5 टंका रे डालमा भात कहा पाई for citizen or for the customer now that is for the citizen for whom to produce the state will decide एटी कहा पाई प्रोडक्शन होची is this clear okay next are challenges of an economy कोन इकोनॉमी रे चैलेंज कोन देखिबा को मिलुची हम what are the challenges of an economy प्रथम चैलेंज होची अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी रे गोटे प्रोडक्ट मिलिया दरकार अदरवाइज जदी अवेलेबल न हुए अदरवाइज प्राइस हाइक हे जिवो कोन हबो अदरवाइज प्राइस हाइक हे जिवो प्राइस बढ़ी जिवो हां कि नहीं ताल प्रथम हला इकोनॉमी रे इटा अवेलेबल हवा दरकार अवेलेबल पई फंड दरकार कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट दरकार कोन कहले अवेलेबल हवा पई कैपिटल फॉर्मेशन बा इन्वेस्टमेंट दरकार सेकंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किए डिस्ट्रीब्यूट करिवो किया को आनिवो मार्केट रे किए बिक्री करिवो मार्केट रे किए पहुंचेवो कहार दायित्व ये स्टेट रो दायित्व ना मार्केट रो ना स्टेट मार्केट रो स्टेट माने गवर्नमेंट मार्केट माने प्राइवेट सेक्टर कहार दायित्व तो एई बेसिस रे जदि हमें देखिबा इकोनॉमी को कोन कहली इकोनॉमी को एई बेसिस रे जदि हमें देखिबा तीन भाग रे डिवाइड करा जाए स्टेट मार्केट एवं मिक्स्ड मॉडल स्टेट जोटी कैटर करे स्टेट जोटी को प्रोवाइड करे तो कुआ जाए सोशलिस्ट मॉडल बा कम्युनिस्ट मॉडल मिक मार्केट जोटी कैपिटलिस्ट मॉडल जोटी मार्केट को की कैपिटलिस्ट प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करे तो कोंदी कैपिटलिस्ट मॉडल स्टेट मार्केट मिक्स्ड मॉडल एटा इंडिया रे अछि मिक्स्ड मॉडल where both state and market where both government and private sector exist both private and government sector exist where both private and government sector exist ताको हम कहते स्टेट मार्केट मॉडल बा मिक्स्ड मॉडल बुझी पारले मो कथा कि नहीं तीनटा मेथड बुझियला तीनटा मॉडल बुझियला आसीबी मो मॉडल को पुणी आसीबी
ये कैपिटलिस्ट मॉडल रो कांसेप्ट आसिला बाय आदम स्मिथ 1776 रे गोटे बुक लिखिले जो बुक रो नाम होच वेल्थ ऑफ नेशन प्लीज रिमेंबर द बुक नेम ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ द नेशन नाउ एथिरे से मेंशन कले ही एडवोकेटेड फॉर लासेस फेयर लेखंतु लासेस फेयर रो अर्थ होची नॉन इंटरफियरेंस ऑफ स्टेट नॉन इंटरफियरेंस ऑफ स्टेट इंटरफियर करबोनी ताले किए इंटरफियर करबो ना प्राइवेट सेक्टर स्टेट माने गवर्नमेंट इंटरफियर करबोनी ताले किए इंटरफियर करबो ना प्राइवेट सेक्टर इंटरफियर करबो दैट इज एडवांस्ड that he advocated for laissez faire कोन कहले हमें ताकू he advocated for laissez faire बुझेला laissez faire कोन then he proposed market economy कोन ना जोटी प्राइवेट सेक्टर controlled economy private sector controlled economy है तो कहले हम कोन ना मार्केट इकोनॉमी बट कहले इनविजिबल हैंड कोन पूछो टिके मन देख सुनिबे इनविजिबल हैंड कोन मने करो एग्जांपल नवा में कोलगेट आ गोटे टूथपेस्ट ने हमें क्लोज अप कोलगेट रो क्वांटिटी ने 100 ग्राम लेट्स से यार प्राइस अछि 100 टका नाउ 100 ग्राम रो क्लोज अप रो प्राइस सेम क्वांटिटी रो प्राइस केते रहियो के डिसाइड करियो is the state is the government required to decide this one government एटी इंटरफेयर करिवार आवश्यकता अछि कि गवर्नमेंट को डिसाइड करिवार आवश्यकता the answer is absolutely no the government is not required rather let it be decided by the market force now what is the market force ये 100 टंका रे बिक्री करछि ये जदि ako 500 टंका कर दो ताले कि लोक किनिबे because every consumer is a rational consumer means you take all the decisions wisely all the economic decisions wisely जोटा बेनिफिट सेटा को हमें करिया यदि बहुत कम कर दिए ताले भी लोग क्वेश्चन करिवे त माने ये पाखा पाखी रखिया दरकार 95 रु 105 ये कुछ स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड एटा किए बैलेंस करो ये प्राइस इज डिटरमाइंड बाय होम बाय द मार्केट फोर्स नाउ दैट मार्केट फोर्स इज कॉल्ड इनविजिबल हैंड सो इनविजिबल हैंड कोन एटी देखले हमें व्हाट इज इनविजिबल हैंड नाउ इनविजिबल हैंड रो एग्जांपल हला किए एटी कोलगेट और क्लोज अप रो प्राइस जेतोले डिटरमाइन करा जाउछ कोन कहले कोलगेट एवं क्लोज अप रो प्राइस जेतोले डिटरमाइन करा गला ताको हम कहले इनविजिबल हैंड बुझी पारले मो कथा कि नहीं हां कि नहीं बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट तल कैपिटलिज्म बुझेला कैपिटलिज्म रे टिके ना इट इज ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर नेक्स्ट इज स्टेट इकोनॉमी नाउ जो मार्केट इकोनॉमी देखिले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखिले यार गोटी ऑब्जेक्टिव कही मन रखिए दैट ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव हियर लिखि के रखंतु द ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट बढ़ाइबा होचे मानकर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन so they are least concerned about the citizens they concern only about the customer से माने केवल कस्टमर रो कथा भाबंती सिटीजन कथा भाबंती so it capitalism is silent about the citizens then the next is state economy market economy it was criticized because it is exploitative in nature ये शोषण करूची कोन करूची ना ये शोषण करूथिबा कारणरो it is criticized so by Karl Marx it was criticized so it is like a state economy or interference of the state it interfere करू गवर्नमेंट इंटरफेयर करू बोली कहले स्टेट इकोनॉमी now 1929 ने हला ग्रेट डिप्रेशन and this market economy capitalist economy was not able to enter world from this depression so ei karan pai it was questioned so principle of laissez faire was questioned so it कहले development social sector development of health education यार development এবং gradually it कोन आसला ना mixed economy आसला mixed economy there is existence of private sector and public sector example Indian telecommunication sector in private you have Jio in public you have BSNL so it is a mixed economy बुझी पारले कि नहीं चलो नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट इन एन इकोनॉमी तले इकोनॉमी रे स्टेट रो रोल कोन स्टेट रोल तीनटा इंपोर्टेंट रोल प्रथम हला रेगुलेटर माने स्टेट एठी पॉलिसी डिसाइड करिवो स्टेट पॉलिसी डिसाइड करिवो लॉ बनेइबो इंप्लीमेंट करिवो जो माने ताको न मानिबे से मानको पनिशमेंट प्रोवाइड करिवो बुझी पाले कि नहीं then production कौन प्रोडक्शन करिवो ना प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स रे एग्जांपल मु कहबी टीवी एसी
फ्रिज वॉशिंग मशीन है ना। देन गवर्नमेंट गुड्स रो प्रोडक्शन की कौन मु कहबी हेल्थ यानी एससीबी मेडिकल कॉलेज कथा कहबा गवर्नमेंट स्कूल है ना 2 टंगारे चाउल ये सब गवर्नमेंट गुड्स ताले एटी तीनटा कथा मते एबे समस्त निजे आंसर देबे तीनटा कथा रे हमको आवश्यकता अछि गोटेला रेगुलेटर की करिवो रेगुलेटरी मेकानिज्म का हाथ रहबा दरकार प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड्स की करिवो प्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट गुड्स की करिवो मते कोन रेगुलेटर रो दायित्व हमें कहा को दबा स्टेट को गवर्नमेंट को ना प्राइवेट को गवर्नमेंट को ना प्राइवेट को रेगुलेशन रो दायित्व हमें कहा को दे परिया कौन कहली रेगुलेशन दायित्व हमें कहा दे परिवा गवर्नमेंट को ना प्राइवेट को की करिवो एटी स्टेट समित स्टेट अन्य माने स्टेट श्रिया प्राइवेट ओके रेगुलेशन दायित्व सब गवर्नमेंट करवा दरकार किए गवर्नमेंट बा स्टेट कहीं प्राइवेट सेक्टर कले कौन कर अनुसार डिसाइड करने चेष्टा करियो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने चेष्टा करियो देन प्रोड्यूसर ऑफ प्राइवेट गुड्स ये दायित्व क्या दबा गवर्नमेंट ना प्राइवेट गुड्स प्रोडक्शन ये दायित्व क्या दबा गवर्नमेंट को ना प्राइवेट गुड्स प्रोडक्शन रो दायित्व क्या दबा गवर्नमेंट को ना प्राइवेट को मैंने गवर्नमेंट इज ऑलरेडी ओवरबर्डन इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी बजेट है हेल्थ एजुकेशन बहुत काम कर प्राइवेट लेट द प्राइवेट सेक्टर इंटरफियर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कौन इंपोर्टेंस नहीं कि डेफिनेटली अच्छी प्राइवेट सेक्टर बढ़िले बेनिफिट कौन हम प्राइवेट सेक्टर बढ़िले बेनिफिट कौन ना प्रथम कथा एम्प्लॉयमेंट बढ़ियो प्रथम कथा एम्प्लॉयमेंट बढ़ियो आउ कौन बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर बढ़िले एम्प्लॉयमेंट बढ़िया सहित प्राइवेट सेक्टर बढ़िले अवेलेबिलिटी बढ़ियो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बढ़ियो प्रोडक्शन ना प्राइस बढ़ी जो ना अवेलेबिलिटी बढ़ियो प्राइस कंट्रोल हम जदि एसी प्रोडक्शन ही न हो ताले गोटे एसी रो वैल्यू केते 5 लाख 10 लाख हो तो प्राइस कंट्रोल हम सो प्राइवेट सेक्टर इज रिक्वायर्ड प्राइवेट गुड्स पे हमें दबा का ना प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट गुड्स पे गवर्नमेंट गुड्स प्रोडक्शन किए करबा दरकार गवर्नमेंट गुड्स प्रोडक्शन किए करबा दरकार गवर्नमेंट गुड्स किए करियो प्रोडक्शन ना प्राइवेट सेक्टर दबो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दबोनी प्राइवेट सेक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट दबो कि दबो नहीं तो जेहेतु प्राइवेट सेक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट दबोनी माने गवर्नमेंट हैज टू इंटरफियर किए करियो ना गवर्नमेंट को एठी इंटरफियर करियो पड़ो ताले कोन लिखबे इट शुड बी बाय द गवर्नमेंट ताले बुझिए गला समस्त को एति की कथा ना डाउट अछि कोंदु तापर आसीबा गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट को डिमांड और सप्लाई क्लियर वेरी गुड डिमांड और सप्लाई को आसीबा डिमांड कौन डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय दीटा कथा देखिबे हम डिमांड कौन मुझे मोर गोटे इच्छा अछि गोटे एरोप्लेन रखिबी गोटे चॉपर रखिबी कटक रो भुवनेश्वर जावा पई नाउ इज इट अ डिमांड डिमांड तो अच्छी मोर सो मु आपको डिमांड कहि परिबी गोटे प्राइवेट जेट रखिबी इज इट अ डिमांड आई हैव अ विल दैट इज एक्सेप्टेड बट आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड मु आपको अफोर्ड करि परिबे ताल दीटा कथा मिसिले डिमांड हबो प्रथम हला विलिंग द्वितीय हला एबिलिटी टू बाय कोन कहली विलिंग थिबा दरकार इच्छा थिबा दरकार एवं एबिलिटी थिबा दरकार टू बाय विलिंगनेस सहित कौन कहली एबिलिटी थिले ही ताकू कहबी कौन ना दैट इज कॉल्ड डिमांड अदरवाइज ताकू मु डिमांड कहि परिबे बुझी पारले क्लियर ओके तो डिमांड कौन कहूछ डिमांड फंक्शन कौन कहूछ डिमांड आउ प्राइस भीतर कौन रिलेशनशिप मते को डिमांड बढ़िले प्राइस बढ़िबो कि नहीं
बा प्राइस बढ़िले डिमांड बढ़िबो ना कमिबो मते को लॉ ऑफ डिमांड कोन कहूछ प्राइस बढ़िले डिमांड बढ़िबो ना कमिबो बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट और इजी कांसेप्ट प्राइस इंक्रीज हला प्राइस इंक्रीज हला डिमांड कोन हबो इंक्रीज हबो ना डिक्रीज हबो गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस बढ़िले तुम डिमांड बढ़िबो ना कमिबो प्राइस बढ़िले डिमांड कमिबो ग्रेप्स प्राइस 150 रुपीस 200 500 डिमांड कमी जिवो सो इनवर्स रिलेशनशिप मन रखन higher the price lower the demand lower the price higher the demand higher price low demand low price high demand बुझिला मु प्राइस कथार कहूँ एक्सेप्शन अच्छी गिवन नाउ वेवलेंथ गुड्स कौन मु आसे कहे डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय कहली कथा डिमांड फंक्शन कहली हैला लॉ ऑफ डिमांड कहली एठी देखो एठी गोटे कर्व नै छि मु एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रे प्राइस बढ़ले डिमांड बढ़े कहबी सेठी मु देई छि तुमे जो क्वेश्चन करू ना एठी कोन डिजाइनर क्लॉथ हैला कोन डांस क्वीन व्हाट इज योर एग्जैक्ट नेम डांस क्वीन इज मेंशन्ड सो मु कहबी सेठी डिस्कस करबी से टाइप ऑफ गुड्स को कोन कोन हैला आगु को एक्सेप्शन क्लॉज रे मु रखि छि नाउ देखो एठी एक्स एक्सिस रे नै छि मु डिमांड वाई एक्सिस रे नै छि प्राइस ठीक है मार्क करो देखो एठी एक्स एक्सिस रे डिमांड एठी देखो डिमांड इंक्रीज होउची देखो डिमांड इंक्रीज डिमांड इंक्रीज डिमांड इंक्रीज डिमांड इंक्रीज केतेबेले प्राइस ता केतेबेले होउची देखो प्राइस कोन होउची एठी कमुची तो प्राइस कमिले डिमांड बढ़ुची एई पॉइंट को मार्क करो एठिला कोन मैक्सिमम डिमांड मिनिमम प्राइस एवं मैक्सिमम डिमांड एई पॉइंट देखो एठी ये कोन कहूची मिनिमम डिमांड मैक्सिमम प्राइस प्राइस सबुठु अधिक डिमांड कम बुझिला ना नहीं दिस क्लियर तो ये कहले हम कोन डिमांड कर्व नेक्स्ट पॉइंट को आस ताले डिमांड को को फैक्टर डिटरमाइन करिवे व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन डिमांड द फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी गोटे कमोडिटी रो प्राइस केते अछि अधिक अछि ना कम अछि तो मु देखिले ऑलरेडी प्राइस अधिक रहले लो डिमांड कम प्राइस रे हाई डिमांड सिंपल जस्ट देन प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिलेटेड गुड्स रो प्राइस केते अछि मन करो चा कप रो प्राइस चीनी रो प्राइस बढ़िले चा रो प्राइस बढ़ि जिवो चा पत्ती रो प्राइस बढ़िले चा रो प्राइस बढ़ि जिवो नै कि एग चिकन रोल खाउछन एग रो प्राइस बढ़िले रोल रो प्राइस बढ़ि जिवो सो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी इज आल्सो इंक्लूडेड हियर बुझिला ताले जदि हम देखिबा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस केते कोन कहली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एवं परसेंटेज चेंज इन प्राइस केते तब कहा जाए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन कौन ताको ता कोन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बुझिला रेडी कौन देखिली मु कहली क्वांटिटी डिमांडेड केते परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड केते माने कर 100 केजी डिमांड थिला डिमांड बढ़ी की 200 केजी हे गेला ताले परसेंटेज केते चेंज हेछि एवं प्राइस चेंज केते हेछि ए जो परसेंटेज हिसाबटा करबा जो परसेंटेज हिसाब करबा ता कहते इलास्टिसिटी बुझिला ये जो परसेंटेज हिसाब करबा ता कहते इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ओके तीनटा इंपोर्टेंट पॉइंट कहबी टिके बुझिबे गोटे कहबी इलास्टिक डिमांड आ गोटे कहबी इन इलास्टिक डिमांड आ गोटे कहबी नो चेंज इन डिमांड बा जीरो प्राइस इलास्टिसिटी कोन ध्यान देके सुनिए गोटे मिनिट तीनटा कांसेप्ट क्लियर हो फर्स्ट जदि प्राइस चेंज हैला ता सहित क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हे गला ग्रेप्स रो एग्जांपल नो ग्रेप्स रो प्राइस 100 रुपीस पर केजी डिमांड लेस से 500 केजी प्राइस कमिला 100 टंका रु कमी 80 टंका हला डिमांड 700 केजी प्राइस 70 रु कमी की 50 हला डिमांड 800 केजी तले आपको कहले कोन दिस इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड कोन कहले इट इज इलास्टिक डिमांड सेकंड चेंज ऑफ प्राइस हला
मनकर पोटाटो केजी थिला 20 रुपीस डिमांड थिला 100 केजी पोटाटो रुपीस बढ़ी गला 30 रुपीस डिमांड 98 केजी ताने स्लाइटली चेंज हला ताको कहला हमें इनइलास्टिक डिमांड डजंट चेंज मच अधिक चेंज हलानी मु कहली कि डिमांड बढ़िला कमिला कोन कहली डिमांड सॉरी प्राइस ता चेंज हला बट या ऊपर किछि इंपैक्ट नहीं मेडिसिन रो प्राइस 2 टंका हो 20 टंका हो 200 टंका हमें खाइबा ही खाइबा तो जीरो प्राइस इलास्टिसिटी नो चेंज एट ऑल प्राइस किछि भी चेंज हो डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट फिक्स डिमांड ता कहला हमें जीरो प्राइस इलास्टिसिटी हला एठी कहली प्राइस चेंज हेले इलास्टिक अल्प चेंज हेले इनइलास्टिक मो कथा बुझी पारिले कि नहीं बुझी पारिले कि नहीं क्लियर तीनटा कथा श्रेया यस वेरी गुड now this is the economics in the most simplest form I am presenting economics in front of you in the most simplest form and I expect everyone to understand all these concepts these are very basic concepts बाबू समस्त बुझुचंती हां कि नहीं बुझुचंती समस्त तापर आसी टाइप्स ऑफ गुड्स another important concept types of goods देखो जदि किछि प्रोडक्ट थांती जदि गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस बढ़े आ गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस भी बढ़ी चा कप रो प्राइस 5 टंका कॉफी 10 टंका चा कप रो प्राइस 5 टंका रो बढ़ी के 10 टंका हो जाए ताले पीपल विल प्रेफर कॉफी ओवर टी कहना चा और कॉफी समान प्राइस है समस्त कॉफी पीबे तने को सब्स्टिट्यूट गुड्स गोटे बढ़िले आ गोटे आपे बढ़ी जिवो रसगोल्ला गुलाब जामुन दीटा प्राइस 10 टंका रसगोल्ला रो प्राइस बढ़ी 15 टंका हो गले रसगोल्ला प्राइस 15 टंका हो गले गुलाब जामुन प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ी जिवो ताको कहआ जाय सब्स्टिट्यूट गुड्स गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस बढ़िले आ गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस बढ़ी जिवो गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस बढ़िले आ गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस बढ़ी जिवो देन कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कॉम्प्लीमेंटरी कोन चा पीले मु ऑलरेडी एग्जांपल दे चीनी बढ़िले प्राइस चा रो प्राइस बढ़िवो चा पत्ती रो प्राइस बढ़िले चा रो प्राइस बढ़ो लस्सी चीनी प्राइस बढ़िले लस्सी प्राइस बढ़ो इंग्रेडिएंट रो प्राइस बढ़िले टोटल प्रोडक्ट रो प्राइस बढ़ी जिवो दैट इज कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स कोन कहली कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स एग्जांपल टी एंड शुगर नॉर्मल गुड्स कोन ना मो इनकम बढ़िला मो इनकम बढ़िवा सहित किछि प्रोडक्ट रो डिमांड भी बढ़ी जाए इनकम बढ़िवा सहित किछि प्रोडक्ट रो डिमांड भी बढ़ी जाए जेमिति कि कोन ऑर्डिनरी टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन बाइक ये सब हमर डिमांड बढ़िले माने इनकम बढ़िले ये सब रो डिमांड बढ़ी जाता पजे ऑर्डिनरी गुड्स वाला नेक्स्ट इंफेरियर गुड्स कोन देखा जो इनकम बढ़ी जाए आगु डीपी लंठन यूज होतला एबे यूज होची ना काहे कि इनकम बढ़ीवा सहित किछि जिंसर यूज ता ऑब्सोलेट हो जाए पुराना कालिया कहि कि ताको सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस कहि कि हमें यूज करू जेमति कि डीपी लंठन केरोसिन यूज हो इनकम बढ़िले हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज कले केरोसिन यूज कलेनी सो केरोसिन बिकम्स इंफेरियर गुड्स इंफेरियर माने जहार वैल्यू कम बुझियला नेक्स्ट आउ किछि समय लोक मान पाखे प्राइस बढ़िले भी किछि ऑप्शन न थाए दे हैव टू परचेज दोस प्रोडक्ट ताको दे गिफ्ट एंड गुड्स पोटैटो प्राइस इंक्रीज हेले यू डोंट हैव ऑप्शन पोटैटो आलू रो ऑप्शन कोन किछि नाही सब्स्टिट्यूट सो यू हैव टू यूज दैट इज कॉल्ड गिफ्ट एंड गुड्स आ गोटे जो एग्जांपल दउतलो किछि प्रोडक्ट को यूज करा जाय काहे कि ना लागे कि एटा अधिक टंका हेतिबा कारणरो कोन कहले अधिक टंका हेतिबा कारणरो इट इज अ बेटर गुड्स फॉर अस ताको दे वेवलेन गुड्स सो इंक्रीज प्राइस नाउ यू विल परचेज मोर फॉर एग्जांपल आईफोन केते बेले किनुचे देखछ नहीं आईफोन जो मान धरन से माने कोन आउ किछ दिसनो आईफोन रो सिंबल टा से जो एप्पल टा फाळे खियाइतबो से टाइम दिसतिबो एप्पल सिंबल टा दिसुतिबो समस्त को कहीं से माने केबे तंग आईफोन ना पॉकेट ना बैग रखिबे सब हाथ रे धरतिबे जस्ट टू शो यू दैट आई एम यूजिंग द आईफोन हां कि नहीं देखिया पई केवल आईफोन रो सिंबल टा को देखांती से माने ता कहते वेवलेन गुड्स कहीं कि ना प्राइस बढ़िले हमको लागु कि इट इज अ बेटर प्रोडक्ट फॉर अस कोन कहली प्राइस बढ़िले हमको लागु इट इज अ बेटर प्रोडक्ट so it is a wavelength goods now clear inferior goods wavelength goods given goods हां कि नहीं हाँ half apple हाँ half apple is the symbol of aristocracy
हाफ एप्पल इज द सिंबल ऑफ अरिस्टोक्रेसी जेते भी जिनस हाथ में धरता हो दीटा चारटा बैग धरती हाथ में आईफोन टा धरा बैग सहित देखा कौन कहते वेवलेन गुड्स बुझी पारे वेवलेन गुड्स कौन ना नाई कहतु तापर आसबि सप्लाई सप्लाई कौन सेमती willing to supply and able to sell दीटा हेबा दरकार willing थिबा दरकार सप्लाई करिया को एवं एबिलिटी थिबा दरकार बुझुची कि ना नहीं मो कहि मोर इच्छा अछि एटम बम बिक्री करिया को दैट इज ओनली willing now I cannot sell I don't have ability to manufacture atom bomb and sell मु सेल करि परिबे so that is only willing will not simply mean supply so supply करिया पई कोन दरकार ना willing सहित ability दरकार मोर ability थिबा दरकार now what I can supply I can deliver economics class I can deliver economics class I can supply content for economics that is supply बुझियला but आउ किछि प्रोडक्ट जोडा मु न पारिबी no that is not supply clear then supply function कोन कहूची ये कोन कहूची ना supply function shows the relationship between quantity supplied and the price quantity supplied and the price कोन कहले quantity supplied and the price हला मते को quantity supplied and the price कोन आर इंपैक्ट पड़िबो यदि प्राइस इंक्रीज हुए गोटे प्रोडक्ट रो प्राइस इंक्रीज हे गला ताले मैन्युफैक्चरर कोन करिवो पेन 10 टंका रे बिक्री होतला 15 टंका रे बिक्री हला ताले मैन्युफैक्चरर कोन करिवो मैन्युफैक्चरर लाभ होबो मैन्युफैक्चरर अधिक सप्लाई करिवो सिंपल कथा तो मार्केट प्राइस बढ़िले सप्लाई बढ़िवो कोरोना समय रे मास्क रो प्राइस बढ़ी गला काहे की ना सप्लाई डिमांड अधिक हो गला तो प्राइस बढ़ी गला तो केन सप्लाई इंक्रीज होबो केते बेले ना प्राइस इन सप्लाई इंक्रीज हो प्राइस इंक्रीज हेले बुझियला मो कथा इज दिस क्लियर सो इट इज एटा को कोंती लॉ ऑफ सप्लाई देखो केते सहज लॉ ऑफ सप्लाई देखो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई केते सहज देखो yes to maximize profits yeah submit yes more return ज्योति absolutely correct समस्त ठीक कहउछन बहुत बढ़िया so very much happy that all of you were able to answer these questions समस्त आंसर दोछन बहुत भल लागुची that depends on the transformation of goods cost price yes cost price is also important आसीबी मु कॉस्ट प्राइस को डोंट वरी फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस डिस्कस करी स्टेप बाय स्टेप जीवा डिस्कस करी फैक्टर कॉस्ट को आसीबी मार्केट प्राइस को आसीबी नो आई थिंक लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज क्लियर टू एवरीवन मुझे ताले इक्विलिब्रियम कोन ना व्हेन डिमांड मीट्स सप्लाई तो डिमांड और सप्लाई डिमांड अनुसार जेतबे सप्लाई जेतिक डिमांड सेतिक सप्लाई दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बुझी पारेले कि नहीं बुझी पारे कि नहीं कहतु ताले टिके रिवाइज कर दो आमे जो जो पॉइंट ऊपर डिस्कस करले जहा जहा कहली टिके जल्दी जल्दी आंसर देबे मते व्हाट इज इकोनॉमिक्स जहा पूछिले कोन पूछिले देखिया टिके समस्त इकोनॉमिक्स कोन शॉर्टकट रे कीवर्ड रे खाली आंसर देबे टिके जल्दी 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 कहबे इकोनॉमिक्स कोन easily understandable yes thank you Jyoti yes family management or I would call it is a branch of humanities yes human wants satisfaction of human wants clear satisfaction of human wants it is the study of humanity economic activity को देखुचे मते किछि economic activity ना कहंतु name of some economic activity name of some economic activity ना टिके कहि देले जल्दी जल्दी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी भीतर थ्योरी किए
इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी भितर थ्योरी किए प्रैक्टिकल किए माइक्रो और मैक्रो भितर ब्रॉड किए न्यारो किए माइक्रो मैक्रो भितर ब्रॉड किए और न्यारो किए इकोनॉमी इकोनॉमिक्स थ्योरी इकोनॉमी इज प्रैक्टिकल है इकोनॉमिक्स देख लिखाई जाको पढ़ो समस्ते नहीं है क्लास पर समस्ते पढ़ा माइक्रो नैरो मैक्रो इज ब्रॉड ना प्रॉब्लम देखले व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस नहीं तीनटा प्रॉब्लम देखले व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर whom टू प्रोड्यूस now मते को फॉर द सिटीजन हु विल प्रोड्यूस फॉर द कस्टमर हु विल प्रोड्यूस सिटीजन पई के प्रोडक्शन करिवो सिटीजन पई प्रोडक्शन किए करिवो कस्टमर पई प्रोडक्शन किए करिवो सिटीजन पई गवर्नमेंट कस्टमर पई प्राइवेट हाँ कि नहीं ओके ये सब पॉइंट ऊपर आम डिस्कशन कले अच्छा मत देखो मार्केट मार्केट जो इकोनॉमी को कंट्रोल करे ताको कौन कहती मार्केट जो इकोनॉमी को कंट्रोल करे ताको कौन कहती जल्दी जल्दी जो इकोनॉमी को मार्केट कंट्रोल करे कौन कहती कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेरी गुड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कि नहीं ओके वेल्थ ऑफ नेशन बुक किए लिखिले वेल्थ ऑफ नेशन बुक किए लिखिले रिटन बाय वेल्थ ऑफ नेशन बुक किए लिखिले आदाम स्मिथ इंडियन इकोनॉमी को टाइप रो इंडियन इकोनॉमी रो नेचर कौन प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव कौन प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव कौन गवर्नमेंट सेक्टर ऑब्जेक्टिव कौन प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव कौन और गवर्नमेंट सेक्टर ऑब्जेक्टिव कौन ताले बुझी पारिला ये एक्सपेक्ट समस्ते भावुँ आज क्लास को समस्ते बुझी पारिले कि नहीं ताले कौन शिखिले आज क्लास अच्छा लास्ट कॉन्सेप्ट गोटे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर अलाइड एग्रीकल्चर आसे सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री टर्शियरी सर्विस सेक्टर आसे लाइक टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी ये सब आसन आ गोटे सेक्टर अच्छी तो क्वाटरनरी सेक्टर कहते जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आसे बुझीला रिसर्च और डेवलपमेंट आसे क्वीनरी जो डिसीजन मेकिंग आसे तो कहते क्वीनरी सेक्टर है समित पचार सर डेली क्लास रहिबो 9 pm रे योर चॉइस व्हाट इज योर डिमांड आपण मानक डिमांड कोन क्लास रहिबो ना नहीं नॉडर यदि क्लास रहिबा को कहबे ताले क्लास रखिबा यदि क्लास दरकार नहीं इकोनॉमिक्स ही जाई ताले रखिबा नहीं ठीक अछि सो
कमेंट रे जणेबे एटा क्लास परे कमेंट सेक्शन रे जणेबे डेली समित एटा एबे नहीं कमेंट क्लास परे डेली क्लास परे कमेंट रे जणेबे रहइबो कि नहीं क्लास ठीक अछि चलो ताले हमें देखिले कोन कोन सिखिले आज रो क्लास रो बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैला बेसिक कांसेप्ट्स ऊपर आज हमें डिस्कस कले हमें सिखिले आज रो क्लास रो डिमांड कोन हमें सिखिले आज रो क्लास रो सप्लाई कोन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ऊपर डिस्कशन कले इकोनॉमिक्स कोन इकोनॉमी कोन जानिले ए सब इंपोर्टेंट पॉइंट मान को हम आज रो क्लास रे डिस्कशन कले सो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन नेक्स्ट क्लास कोन करियो नेक्स्ट क्लास रो कथा कमेंट रे मु कमेंट देखला परे काली रो क्लास आनी so that's all for this session thank you everyone good night ठीक अछि that's all for this session thank you good night